How are you all? Welcome back. Welcome to Vedantu JEE channel, everyone. I hope all of you are doing fine. And first and the foremost thing, happy Independence Day to all of you guys. And I welcome you all once again on this awesome session on our Vedantu's JEE channel. And especially the students who are aspiring for JEE 2021. This is the time of the day and the week when we meet here to discuss the physics for JEE and NEET examination. Okay guys, so today's topic is bar magnet in external magnetic field. Okay guys, तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी अबाउट बार मैग्नेट्स डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, जहाँ पे हम लोगों ने बार मैग्नेट की हेल्प से या उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन होता है वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस इफ यू आर गोइंग टू प्लेस दिस बार मैग्नेट in an external magnetic field, much like the discussion that we had in the chapter of electrostatics, जहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था. सो व्हाट वाज हैपनिंग विद इट इज व्हाट सिमिलरली बी डिस्कस्ड हियर about the bar magnet. Okay guys, so let's go forward, and for all those who are new on the channel, this is me, your Suri Sir. I am a passer of IIT Bombay, and on this channel I'm known as Mugambo. Why am I called Mugambo is because when you will crack this examination of JEE, Mugambo khush hoga. Okay, and if you are new, probably you are not aware about the schedule that we follow for JEE 2021. So guys, every day at 9 p.m. we meet here for theory discussion of physics, chemistry and maths. तो अगर कोई नीट एस्पायरिंग स्टूडेंट है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप हमें यहाँ पे अटेंड ज्वाइन कर सकते हो. ओके, डेज आर ऑल्सो मैंशनड ओवर देयर, एंड on 3 days in a week we meet for MCQs discussion. Okay guys, so remember every day 9 o'clock you have to be on the channel, और 8 बजे, which all those days are, those are Mondays, Wednesdays and Thursday. इन 3 दिन पे हम मिलते हैं MCQs discussion के लिए. इस वीक जैसे हम लोगों ने मेंटी क्विज किया था. Okay guys, also let me introduce you to your teachers. This is Harsh sir, he is your chemistry teacher. This is me, your physics teacher, and this is Arvind sir, he is your mathematics master teacher. Okay guys, cool. उसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे भी आके हमसे पढ़ सकते हो, हमसे जेई की प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो. एंड हाउ इज़ दैट पॉसिबल गाइज? अगर आप वेदांतु प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो तो दैट सब्सक्रिप्शन प्लान इज कॉल्ड एज वेदांतु प्रो. तो जैसे हम फिजिकल क्लासरूम कोचिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें टीचर्स कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, राइट, एवरी डे. उसके अलावा हमें स्टडी मटेरियल दिया जाता है, और उसके अलावा हम रेगुलरली टेस्टिंग के थ्रू जाते हैं, हमारा परफॉर्मेंस हमें एनालाइज करके मिलता है. दिस इज समथिंग विच आई वुड से इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप जेई या नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो. तो ऑब्वियसली वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे भी आपको ये सारी चीज़ें तो मिलनी ही हैं, राइट गाइस. सो दिस इज लाइक द फंडामेंटल्स. दीज आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड एंड विल बी गिवन टू एनी जेई एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट ऑन वेदांतु's प्लेटफॉर्म अंडर सब्सक्रिप्शन वेदांतु प्रो. बट what makes वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन even more awesome, ये मैं आपको बताता हूँ कि वेदांतु प्रो ज्वाइन करने के और बेनिफिट्स क्या हैं. तो ऑब्वियसली आपकी जेई या नीट की प्रिपरेशन तो आप एक लॉन्ग टर्म बैच के साथ में करते ही हो. यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म बैच and then you continue your journey of JEE and NEET preparation. उसके अलावा आप किसी भी लाइव माइक्रो कोर्स को कभी भी अटेंड कर सकते हो, राइट. एंड वाई वुड यू नीड दैट, बाय द वे? क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमें? तो बहुत बार हमें किसी चैप्टर को रिवाइज करने की जब ज़रूरत होती है तो हम फील करते हैं कि कोई हमें बिठा के वापस से रिवाइज करा दे, पूरा चैप्टर हमें दोबारा से एक अच्छे से पढ़ा दे, या हमारे जब यूनिट टेस्ट आते हैं स्कूल में तब भी हमें ऐसा लगता है. तो गाइज दैट इज़ व्हाट द बेसिक एसेंशियल आइडिया ऑफ माइक्रो कोर्स इज़. आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को अपनी स्पीड पे, अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ सकते हो, दैट टू नॉट रिकॉर्डेड बट लाइव. ओके, दैट्स वाई माइक्रो कोर्सेज आर अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म. ओके, उसके अलावा जब टाइम आएगा और आपको ज़रूरत होगी तो आप माइक्रो कोर्स के साथ में, क्रैश कोर्सेज के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, और उसी प्रो सब्सक्रिप्शन में आप क्रैश कोर्स को भी एक्सेस कर पाते हो. ओके, उसके अलावा यू गेट टू चूज दैट विच लैंग्वेज बैचेस यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. आप हिंदी के बैचेस में जाना चाहते हो या आप इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज बैचेस में जाना चाहते हो, दैट फ्रीडम इज ऑलवेज देयर फॉर यू. ओके, एंड द वन विच आई एनवी, कि हमारे टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था,
टू स्टडी बाय द टीचर्स ऑफ योर चॉइस। यस गाइस, तो अब ये पॉसिबल है कि आप जिन टीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे आप उनके सेशंस अटेंड कर सकते हैं। यस, अगर आपको फिजिक्स मुझसे पढ़ना है तो आप मेरे बैचेस में आ सकते हैं। अगर आप हर्ष सर या लव सर से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अरविंद सर के साथ आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं ऑन आवर वेदांतु's प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, राइट गाइस, दैट इज नॉट, आई एम नॉट किडिंग, या दिस इज पॉसिबल, ओके। और जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द वेव प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज हाउ टीचर्स इज विजिबल एंड एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। दिस इज वेयर स्टूडेंट्स आर एबल टू इंटरैक्ट among each other and along with the teachers as well। उसके अलावा आप यहाँ डाउट्स पूछ सकते हो Q&A पैनल में, और ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो आप देख रहे हो दिस इज हैपनिंग लाइव, ओके गाइस। सो दिस इज नथिंग रिकॉर्डेड, इट इज़ इक्वलेंट टू अ फिजिकल क्लासरूम। और स्पेशली जो अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हम लोग सब फेस कर रहे हैं कोविड की वजह से, तो हमें ऐसे में अगर रिस्क नहीं लेना है बाहर जाके फिज़िकल क्लासेस में बैठ के, हमें वो रिस्क नहीं लेना है कोविड सिचुएशन में, तो डेफिनेटली आप अपने घर के कंफर्ट में अपनी जेई और नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो, जारी रख सकते हो बाय स्टडिंग एट होम विद द हेल्प ऑफ वेदांतु प्रो। तो ज्वाइन करने के तरीके क्या हैं, बहुत ही सिंपल से प्रोसेसेस है। ये लिंक है गाइस जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, बहुत ही सिंपल सा लिंक है vdnt.in/ytpro। इस पे अगर आप जाओगे तो you will have to go and select your standard, which standard you are in, which exam you are preparing for, and accordingly select the course that you want to go for, okay। Courses ranging, or rather not course but subscription ranging from 1 month, 3 months, 6 months and 12 months are there, okay। In fact guys, अगर आप अभी join करते हो तो for this last weekend which I am saying is what we call as the Independence Week, तो इस वीकेंड पे एक एडिशनल ऑफर चल रहा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन बाय गेटिंग अ 50% डिस्काउंट, ओके। तो ये वैलिड है 3 दिनों के लिए, 14th, 15th और 16th ऑफ अगस्त। इन 3 दिनों में अगर आप वेदांतु सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू गेट 50% additional discount by using this code SMPRO, ओके गाइस। तो इस कोड को आपको यूज़ करना है, जो लिंक मैंने आपको बताया है, जस्ट गो देयर, यूज़ दिस कोड SMPRO एंड यू कैन enroll on Vedantu's platform and study with the best of the teachers on the platform and in the country and continue your JEE and NEET preparation, okay guys, cool। आई होप इट्स क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। और अगर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए हो, जेई चैनल पे पहली बार आए हो, तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना सो दैट व्हेनेवर योर मोगैम्बो कम्स लाइव यू गेट द नोटिफिकेशन, ओके पीपल, ऑसम। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स अबाउट बार मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हाउ एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू बिहेव। सो गाइज, एक क्विक रिकैप, इफ यू गाइज रिमेंबर, एक बार मैग्नेट जो है इट इज बेसिकली अ मैग्नेटिक डाइपोल। उसमें एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल को हम नेगेटिव पोल की तरह ट्रीट करते हैं, नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव पोल की तरह ट्रीट करते हैं, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आते हैं, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाती हैं, राइट गाइज। उसके अलावा जो साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं वहाँ पे आके, ओके गाइज। और उसकी वजह से हम ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता लगा चुके हैं ऑन द एक्सिस एंड द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। बट टुडे इज नॉट अबाउट, एज इन टुडे द डिस्कशन इज नॉट अबाउट दैट। टुडे द डिस्कशन इज कि अगर ये मैग्नेट किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दी जाए तो व्हाट विल हैपन टू इट, राइट गाइज। आई होप इट रिंग्स अ बेल कि हमने ऐसा एक डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, ओके गाइज। तो बिल्कुल वैसा ही डिस्कशन होने वाला है। ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस फोर्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो अगर यहाँ पे हमारे पोल्स, हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैग्नेट के पोल्स रखे हुए हैं, तो मैग्नेट के पोल्स जो हैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और वो इंडिविजुअल फोर्सेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा m इंटू बी, जस्ट लाइक F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है F इक्वल टू एम बी, ओके, वेयर m इज द पोल स्ट्रेंथ और यू कैन से मैग्नेटिक चार्ज एंड b इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Similarly, this is also the same force in magnitude, but direction is opposite because one of the pole is behaving like a positive pole, other one is behaving like a negative pole. Okay, guys. So if you'll see clearly, you will see that the net force acting is nothing but zero.
just as we studied in the case of electrostatics also, because the force which is acting on the right side is equal to the force which is acting on the left side, and we are assuming obviously that the B is uniform. Okay, the magnetic field that I'm talking about, that's basically is a uniform magnetic field. So obviously जो magnitude है of the force which is acting on the north pole and on the south pole, they are equal and opposite. They are not action reaction pair, but they are equal and opposite, so they will simply cancel out each other. So we can simply conclude that the net force acting on the dipole is going to be zero, right people? Now we know that the dipole moment of this magnet is going to be from negative to positive pole, which is from south to north, and say that this is the equatorial line of this bar magnet, such that each pole is at a distance L, and now we are interested in finding the torque which is experienced by this bar magnet. Okay guys, तो हम क्या करते हैं, जो डाइपोल की एक्सिस है उसके अबाउट और जो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके अबाउट हम जो ये फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें रिजॉल्व कर देते हैं. Okay guys, so if you look at this angle is theta as it is mentioned here, and similarly ये एंगल भी थीटा हो जाता है. तो फोर्स को मैं रिजॉल्व करता हूँ, और ये वाला जो कंपोनेंट है as you all can see will be nothing but f cos theta, और जो परपेंडिकुलर टू बार मैग्नेट है वो हो जाएगा f sin theta. Okay, I hope you are already starting to wonder which component of force will try to rotate the dipole and which one will not be able to rotate, right? What do you think guys? कौन सा कंपोनेंट रोटेट करता है, टॉर्क प्रोवाइड करता है? अगर हम नॉर्थ पोल के ऊपर नज़र डालते हैं तो नॉर्थ पोल जब रोटेट करेगा मैग्नेट की रोटेशन के साथ में, तो ये उसका सर्कल होगा. तो यू कैन सी दैट एफ साइन थीटा टेंजेंशियल फोर्स है और एफ कॉस थीटा रेडियल फोर्स है, और रेडियल फोर्स कभी भी टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता. इट इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल फोर्स विच इज़ एक्टिंग at a distance of L, which will be able to generate the torque. And you can see that both the forces which are acting, or rather the components of the forces which are acting tangentially, they both are trying to rotate as per the diagram the dipole in clockwise sense. तो मैं लिख देता हूँ जो टॉर्क है वो बेसिकली किसी भी एक की वजह से हम लिख देंगे और उसे डबल कर देते हैं. सो 2 times f sin theta into L is basically the torque. I hope you guys remember what you studied in the chapter of rotation motion, that torque is nothing but, especially the magnitude wise, it's the perpendicular component or tangential component of the force multiplied by the distance from axis of rotation, which is L here for both the forces, right? So दोनों ही forces L distance पे हैं. In fact, one of the reasons we define the length of the dipole 2L is this, ताकि हम center of the dipole से length measure कर सकें. Okay, now what exactly is your force? Force है m into b, तो ये हो जाता है 2L into mb sin theta, right guys? तो अब मैं ज़रा सा इसे रीअरेंज करता हूँ, m into 2L into b into sin theta. and what is m into 2L? ये हमने लास्ट सेशन में देखा था. पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द गैप बिटवीन द टू पोल्स इज नथिंग बट योर डाइपोल मोमेंट. तो ये हो जाता है कैपिटल m into b into sin of theta, and that's basically what your torque is. And we can say that torque mathematically vectorially can be written as the cross product of m and b, right people? Okay, तो just इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो टॉर्क है उसे हम मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे एम बी साइन थीटा, और वेक्टोरियली हम उसे लिख सकते हैं सिंपली एम क्रॉस बी. इफ़ यू गाइस रिमेंबर, इसके इक्वलेंट एक्सप्रेशंस थे पी ई साइन थीटा और पी क्रॉस ई, और वेक्टोरियली देख लो इसे वापस से. दिस इज समहाउ आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट दिस. इफ दिस इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, तो m क्रॉस b जो है उसका सेंस ऑफ रोटेशन मुझे जो दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग द थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड. इसका मतलब ये हो जाता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क फॉर द केस व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, सो दैट टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ m and b, right? I hope it is clear to all of you guys. Nice. Okay, now as this is a dipole and you can see that it is experiencing a torque in the external magnetic field, so just like the electrical case, it will actually try to acquire some stability. Means what? Can I say that everything in this universe tries to attain maximum stability and minimum potential energy?
तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी तब होगी, वी कैन से दैट मैक्सिमम स्टेबिलिटी तब होगी जब टॉर्क एक्टिंग बिकम्स जीरो, मिनिमम, राइट, एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम स्टेबिलिटी तब होगी जब टॉर्क जीरो तो होगा बट उसका रिलेशन हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल एनर्जी। अभी सिर्फ इतना बता देता हूं कि स्टेबिलिटी होने के लिए द डाइपोल शुड नॉट इवन ट्राई टू रोटेट, दैट्स व्हाट बेसिकली डिफाइंस द स्टेबिलिटी। और वो सिचुएशन आने के लिए यू कैन सी दैट थीटा हैज टू बी 0 डिग्री, राइट। तो अगर मान लो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, assuming that dipole is already in a position where it is making an angle say theta 1, तो dipole already एक angle theta 1 बना रहा है as you can see as per the diagram which is given to you। तो naturally it will try to go to 0 degree angle, but if I want to store potential energy in any system then obviously I'll have to destabilize it, right? Just like if I lift any object up, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। Why? Because we are increasing the potential energy by increasing the height, because we are destabilizing the system. The object would obviously want to stay as close as possible to earth, right? तो अब अगर मैं इस डाइपोल को destabilize करता हूं by changing the angle to theta 2, तो you can see that डाइपोल आइडियली चाहता था clockwise रोटेट होना, मैं उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, एंड व्हेन आई से मैं उसे रोटेट करता हूं, आई एम द एक्सटर्नल एजेंट हियर, ओके गाइज। So to calculate the potential energy, or in fact the change in potential energy, I'll simply calculate the work which is done by the external agent, okay, and work done by external agent by small amount will be nothing but tau d theta. This torque is equal to the torque which is applied by the conservative magnetic field, okay। तो guys कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विच इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा विच इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम थीटा 1 to theta 2, एंड हाउ मच इज टॉर्क, वी जस्ट नाउ फाउंड इट इज m into b into sin theta। Remember, this is the torque which is equal to the torque applied by the magnetic field. So I am basically trying to make sure that the dipole is rotated without getting any kinetic energy। तो जितना भी वर्क मैं कर रहा हूँ, it is exactly opposite to the work which is done by the conservative field, okay। So जितना भी वर्क मैं करने वाला हूँ, it is going to get stored in the form of potential energy। Cool guys। तो यहाँ से mb कॉमन ले लेते हैं, you will have sin theta d theta जिसका इंटीग्रेशन माइनस cos theta आता है, and it's a definite integration, theta 1 to theta 2 पुट कर देते हैं। So with माइनस साइन ए पुट कर रहा हूँ, तो this will become mb and minus cos theta 2 and minus of minus cos theta 1, मतलब I have put the upper limit minus the lower limit। mb से भी अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो this is becoming the external work or external agent work and the change in potential energy। So the change in potential energy is coming out to be minus of mb cos theta 2 minus of minus mb cos theta 1। Yeah, I can see and you are also sensing that minus minus plus हो जाएगा, but मैं deliberately वो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ because I want to make you understand that if somehow this term becomes 0 and this term you know comes in terms of theta only, then your potential energy can be seen as minus mb cos theta, okay। So this is how we are going to represent the potential energy, always minus mb cos theta, and if you will put the expressions here, you will see that if I put theta final minus initial potential energy, the change, then this is the expression that we are going to get, the earlier one, okay guys। So if we ever have to calculate the work done by external agent or the change in potential energy, यहाँ पे हम उसे कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो इट विल बी सिंपली mb cos theta 1 माइनस mb cos theta 2, तो mb कॉमन ले लेता हूँ और अब सिंपली उसे लिख देता हूँ ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कैसे यूज़ करना है वो समझ सकें, ओके गाइस। तो अगर एट अ गिवन एंगल हमें पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री हम लोगों ने लिखा है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने वाली है, ओके। तो व्हेनेवर दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड here guys,
that as we have got the expression of potential energy, हमें potential energy का जो expression मिला है that is minus mb cos theta. तो u minimum is going to be not 0, u minimum is going to be minus of mb at theta equal to 0 degree. जैसा कि मैंने बोला वो stable equilibrium है, that is called as stable equilibrium because that is the minimum potential energy that you can have. It is less than 0. And if I speak about maximum potential energy, it will be plus mb, और वो हमें मिलेगी at theta equal to 180 degree because cos 180 का value -1 होता है. Okay, and you will call this unstable equilibrium. Yes, जब dipole opposite to the direction of magnetic field arrange कर दोगे तो उसको ज़रा सा डिस्टेबलाइज करने पर इट विल रोटेट टू अचीव 0 degree position. Okay, so we can say that potential energy 0 से प्लस mb और माइनस mb ये उसका रेंज है. ये है द सिचुएशन जब यू हैव टॉर्क 0. in both the cases torque is 0. Okay, tau 0 is 0 only. The only situation is this is unstable, which as I said कि हम unstable और stable equilibrium किस basis पे बता रहे होते हैं. This is your torque 0 and this is also torque 0 because here you have sine 180 degree making it 0 and here you have sine 0 degree which is making it 0, the torque value. But then why do I, or how do I comment on equilibrium, is by looking at the potential energy always and always. Remember that potential energy is inversely proportional to stability. Okay, cool. I hope you have understood. Now let's try to go and solve examples based upon what we have learned. So guys, first question. So if we have a magnetic needle which is kept in a non-uniform magnetic field, okay, non-uniform magnetic field, then it will experience, obviously it is going to experience torque for sure. Okay, but what about the force? So guys, in this case, the force which will be acting on the two poles of the magnet, on one of them it is going to be mb1 and on the other one the force is going to be mb2, and they will not be able to cancel out each other because their magnitudes may be different because the magnetic field is different. That is why the net force will not be 0, and we can say that in a non-uniform magnetic field your magnetic dipole or magnetic needle is going to experience both torque as well as force. Okay, cool. Moving on to this one, this says that you have the maximum torque acting on the magnet of length 0.2 meters in a uniform magnetic field having induction of 0.2 Tesla is given to us. We have to calculate the pole strength. Okay, so already maximum torque की बात हो रही है तो थीटा का जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाता है when you have the value of theta as 90 degree, right? So sin 90 जब 1 होता है, so we have torque maximum and that is equal to m into b given to us, and m को हम लिख सकते हैं small m into L, the length of the magnet, into b. तो हमें small m पता लगाना है which is going to be tau into L into b. So guys, the torque which is given to us is 10 Newton meter. Length is given to you as 0.2. Magnetic field is also 0.2. So we can say that it is nothing but 1000 by 4 because यहाँ से जब हम decimals हटाएंगे ऊपर zeros add कर देंगे. So this comes out to be 250 ampere meter, the pole strength. Okay, people, and we get the answer as option A. I hope you guys are solving along with me. Okay, moving on to next one. इस क्वेश्चन में बोला है that we have a bar magnet of magnetic moment 3 ampere meter square and is placed in a uniform magnetic induction field of 2 into 10 to the power minus 5 Tesla. तो magnetic moment दिया हुआ है, capital B दिया हुआ है, pole strength भी दिया हुआ है. No, if pole of the magnet is experiencing the force which is given to us, then the length of the magnet is going to be how much? Okay, so if we look at the magnetic moment is m into L. Question is asking us to find out L only. तो अगर मुझे स्मॉल m का वैल्यू मिल जाएगा, कैपिटल M ऑलरेडी गिवन है, तो मैं उसे सॉल्व कर पाऊंगा, राइट गाइस. और हमें ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो m इंटू बी होता है, राइट. तो यहाँ से मैं m का वैल्यू लिख सकता हूँ f बाई बी और उसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ. तो L विच इज गोइंग टू बी कैपिटल M बाई स्मॉल m, एंड स्मॉल m को हम लिख सकते हैं f बाई b.
तो दिस बिकम्स एम बी बाई एफ. तो एम, कैपिटल एम इज 3, बी हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड फोर्स हमें दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर -4. ओके गाइज, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल और इवेंचुअली मुझे मिलता है 10 टू द पावर -1 मीटर्स और सिंपली 0.1 meters the length of the bar magnet, which is nothing but your option D. Okay, that's good. Moving on to this question. यहाँ पे हमें बताया है कि we have a bar magnet of length 10 centimeter having the pole strength which is given to us is kept in a magnetic field having magnetic induction, वो भी दिया हुआ है. If it makes an angle of 30 degree with the direction of magnetic field, then the value of the torque acting on the magnet will be how much? तो ऑलरेडी हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लेंथ की दी हुई है, एम भी दिया हुआ है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, एंगल भी दिया है. तो लाइफ इज़ वेरी सिंपल विद दिस क्वेश्चन. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट एम बी साइन 30 डिग्री और कैपिटल एम को लिख देंगे एम इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 30 डिग्री. सो लेट्स पुट द वैल्यूज देन. स्मॉल एम इज 10 टू द पावर -3, okay, Weber it is, which is SI unit. Length is 10 centimeters, which means 10 to the power -1 और 10 by 100 भी लिख सकते हो. So 10 to the power -1 meters of the length. Magnetic field is 4 pi into 10 to the power -3 Tesla and sine 30 becomes half. Okay, so 2 cancels this 2 pi times. Okay, and I see answer is 2 pi into 10 to the power -3 -6 and -1 becomes -7. So looks like the torque is going to be 2 pi into 10 to the power -7, which is nothing but option A. Okay, that's nice. Okay guys, next question. This question में बोला है at what angle a bar magnet should be inclined so that to the magnetic field so that the couple acting on it, or you can also say the torque acting on it, would be half of the maximum torque. Okay, so torque should be equal to half of tau max. So what is torque? It is mb sine theta in general. And what is maximum torque? It is mb, because theta is 90 degree, sine theta is 1. So mb and mb cancels. The angle for which the value will become half of the torque of maximum value is simply going to be 30 degree, because sine 30 is half. Okay, that means correct answer is option A. Okay guys, next one. इस क्वेश्चन में बोला है कि we have a bar magnet जिसका magnetic moment हमें दिया हुआ है. It is free to rotate in horizontal plane. Work done in rotating the magnet slowly from direction parallel to the horizontal field to make an angle of 60 degree. मतलब थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री है और थीटा 2 का वैल्यू 60 डिग्री है. और वर्क डन जब पूछा जाए तो हम हमेशा उसे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क समझते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. ओके गाइज, सो पुटअप कर देते हैं. एम का वैल्यू हमें दिया है 10 टू द पावर 4, बी हमें दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -5, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1 एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री इज हाफ. सो दिस सिंपली मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू हाफ, which is 2 into 10 to the power -1 or simply 0.2 joules. ये है the amount of work which will be required to be done by external agent in order to rotate the magnet from 0 degree angle to 60 degree angle. Okay, so the answer becomes option A. Next question. यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वेक्टोरियली मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है और टॉर्क कैलकुलेट करना है. सो टॉर्क इज बेसिकली m क्रॉस b. मैं उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी सिंपल ऑफ अ वेक्टर. सो इट इज़ 50 आई कैप टेकन क्रॉस प्रोडक्ट विथ 0.5 आई कैप प्लस 3 जे कैप. तो जब मैं उसे 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करूँगा तो यहाँ साइन 0 डिग्री एंगल की वजह से सब कुछ 0 हो जाएगा. और जब मैं 50 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो आई क्रॉस जे हो रहा होगा. दिस विल बी आई क्रॉस आई जिसका वैल्यू 0 होता है और साइन 0 वैसे भी 0 है. राइट गाइस, तो टॉर्क मुझे मिल रहा है ये पार्ट 0, 50 इंटू 3 इज 150 एंड आई क्रॉस जे इफ यू गाइज रिमेंबर इज के कैप. सो द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन बी 150 के कैप न्यूटन मीटर. Okay, now this one.
यहाँ पे हमें बोला है कि वी हैव टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m एंड √3m, दे आर जॉइंट टू फॉर्म अ क्रॉस, जैसा हमने यहाँ क्रॉस बनाया हुआ है, एंड द कॉम्बिनेशन इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ऑब्वियसली अगर हम फ्रीली उसे सस्पेंड करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो नेट वैल्यू होगी इट विल ट्राई टू अरेंज इटसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज व्हाट इज शोन हियर. ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट है which is mr, the resultant value, which is trying to arrange itself parallel to the direction of magnetic field. तो क्वेश्चन ने पूछा है what will be the angle between the magnetic moment m and the field. That means ये angle theta हमें पता लगाना है. So you can see that there is this right angle triangle that you see. ये side √3m है. So in this triangle if you try to find out tan theta will be opposite, which is √3m divided by adjacent, which is m. m cancels, tan theta is equal to √3, that means theta will be equal to 60 degree. तो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन सी. ओके नेक्स्ट वन गाइस. इस क्वेश्चन में बोला है वी हैव अ बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है. इट इज सस्पेंडेड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला एंड 60 डिग्री का एंगल भी है. So with the direction of magnetic field the angle is given. Find out the potential energy in this position. So I told you people potential energy हमेशा हमें लिखना होगा -mb cos theta. So minus of m that is 5, b का value 2, and this is cos of 60 degree we are talking about. So minus of 10 and cos 60 is half. So answer is -5 joules. Okay. So answer is option B, not option A. Be careful with that. Okay. Now this says that a magnet of magnetic moment m is situated with its axis along the direction of the magnetic field of the strength B. The work done in rotating it by an angle of 180 degree will be. तो हमें इनिशियल एंगल बताया है 0 डिग्री क्योंकि इट इज अलाइंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और फाइनल एंगल हो जाएगा 180 डिग्री. वी नो दैट cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है. तो अगर हम वर्क डन लिखेंगे तो दैट इज mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इनिशियल माइनस फाइनल, राइट. सो mb cos इनिशियल वैल्यू जो है दैट इज +1 और फाइनल वैल्यू जो है -1 है. सो दिस बिकम्स mb 1 +1, माइनस माइनस बिकम्स प्लस. सो वर्क डन कम्स आउट टू बी +2 mb, because you are destabilizing the system, you are storing the potential energy. This is also going to be the change in potential energy of the system, and the answer comes out to be option D here. Okay guys, awesome. So I hope you guys understood the questions that we have solved. बहुत ही relatable concept था from electrostatics. और जो भी students नए हैं, all my new students, अगर आपने पहले के lectures miss किए हैं and you want to know how can you cover up the topics that you have missed, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. लेट मी टेल यू दैट क्विकली. सो करना क्या है, ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन द चैनल प्लेलिस्ट, और उस चैनल प्लेलिस्ट में जाके आपको कौन सा प्लेलिस्ट ढूंढना है वो मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज द प्लेलिस्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर. ओके, 2021 इज द ईयर दैट यू विल अपीयर फॉर योर एग्जामिनेशन. और अगर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट ढूंढ रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट 2022 होगी. ओके, ऑसम. और जितने भी स्टूडेंट्स JEE 2020 का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं गाइज, रफली अभी भी 3 वीक्स का टाइम है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, पहले अगर मिस कर दिया था तो लास्ट बैच ऑफ क्रैश कोर्स हैज स्टार्टेड ऑन 10th of August this week only. So if you are interested, join quickly and take the advantage of, you know, how last round of preparation should be. ओके, एक्सपर्ट्स आपको सिखा रहे हैं, या वी आर गोइंग टू टीच यू लाइव. आप टेस्ट भी वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन दे सकते हो. उसके अलावा आपके परफॉर्मेंस के एनालिसिस आपको मिलते हैं. यू गेट टू सी रिकॉर्डेड सेशंस एज मेनी एज यू वांट, एंड ऑब्वियसली यू गेट टू अटेंड द लाइव सेशंस ऑलवेज. ओके पीपल, तो अगर लगता है कि दिस कुड बी द गेम चेंजर इन योर JEE प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डेज, देन डू जॉइन इट, बिकॉज एज ऑफ नाउ आई थिंक it's not about the money, it's not even that challenging for you, it's not even that difficult for anyone to afford. All you have to do is go on this link and click on this link. उसके बाद में जाके वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करो SMCC,
and the crash course is actually worth rupees 25,000. It will be yours for just under 3,000 rupees. Okay, so if you think it is affordable and it can bring the desired result for you, you can get the advantage that you are expecting, then do go for it. Okay, cool. एंड ऑल दोज हु आर न्यू, जितने भी लोग नए हैं और अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो गाइज यहाँ पे आप जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट विद अस, where we give you assignment solution, study material and daily update. हर सेशन, हर थियरी सेशन के लिए you will find the assignments in the description box. Okay, तो उसके solutions आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, और डेली क्या हो रहा है चैनल पे उसके अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, तो you get the notification all the time. Okay, so do join it by following the link which is available in the description box. और अगर इस वीडियो में मज़ा आया, if you guys enjoyed this session, then do press the like button and yes, share with your friends and subscribe to the channel right now if you have not, and press the bell icon so that whenever Mogambo comes live you get the notification. Okay guys, so I'll see you very soon. Till then, keep studying, keep enjoying physics. More importantly, as I always say, stay safe. Bye bye guys.